As viewers would remember, the consecration of the Ayodhya temple had taken place 4 months ago on the 22nd of January. Today is another significant day for Ayodhya when Prime Minister Modi is all set to hold a road show approximately for 2 kilometers in the city. This telecast is focusing on the infrastructural development that has taken place in Ayodhya since then. Now, Ayodhya has experienced the development of infrastructure as something that we're of course going to be delving into. There have been a lot of developments in Ayodhya which include the beautification of Surya Kund, the restoration of the Surya temple, roads, airports, railway station in Ayodhya have also been developed. Clearly, of course, ease of living has improved there. Sharad Kohli, senior economist, is joining us live on the broadcast. Sharad, how much has Ayodhya transformed over the last few months? Well, thank you so much, Uday, and good morning to all the NewsX viewers. Indeed, the transformation has been massive. From a tiny little sleepy town where I went there a few years ago, and I was just there a couple of weeks ago, and I saw that the town is no more the same. The level of infrastructure development is absolutely marvelous. I mean, the roads, the roadsides, the way lights have been designed aesthetically. There is a laser show which happens. The riverside of Saryu has been done up, and of course the temple. Let's not forget the temple. 85,000 crores is the total amount which has been committed to this town. But I would say that because I was just there a couple of weeks ago, I would say that there's work in progress because for example, for the tourists, if we take the hotels. There's only one hotel called Park Inn, I think, which is by Radisson. So I'm told ITC and Taj Group are coming up with a couple of more hotels, with a few more lined up. So what I had to do personally was I had to stay in Lucknow because I couldn't find a hotel in Ayodhya because there's work in progress. It doesn't mean that it's not there. Probably had I gone after a year or so, I would have found plenty of options. So I stayed in Lucknow. So which is what brings me to the point today that Ayodhya as a place or infrastructure boost for Ayodhya is proving to be a boon for the surrounding areas, for places as far as Lucknow, and for Uttar Pradesh as a whole, which is it is going to bring so many people. 31 crore people in 2023 visited Ayodhya and Kashi combined together. And let's not forget that this number is before consecration was done on 22nd January. So you can imagine what 2024 numbers would be like. So I think it's going to be absolutely out of the world. And the kind of, tourists coming from abroad, Uday. There are a lot of people who are coming from abroad. Of course, they do come to India, their friends, relatives, and they do go for places to visit here. But Ayodhya is on top of the list, which implies that Ayodhya is actually bringing, those 3 crore Indians who are settled abroad. I'm only referring to Indians. I'm not including foreigners for now. I'm sure there's going to be some foreigners as well who will be coming to Ayodhya, minus the spiritual reason, or maybe with spiritual reason. We see a lot of ISKCON followers going there. But the number of foreign tourists, which Ayodhya by itself is bringing, is amazing. I mean, people have on their itinerary that we'll go to Ayodhya, then we'll go to Mumbai, we'll go to Goa, we'll go to other places. And as I said earlier on your channel, Uday, that these tourists are of two kinds. One are very staunchly religious people who come there. Some of them will travel barefoot. They will probably walk to the temple from wherever they are barefoot. And there are others who are not staunchly religious, but they want to see what has happened in Ayodhya. They want to see how's this Ram temple come up. They want to look at the places around. They want to get a feel of the town. So I think the best part of Ayodhya is it's not just bringing an out-and-out religious tourism, it's also bringing general tourism. And the benefit it is going to bring to the economy. When I went there, I saw that the brands have already started pitching. Reliance has got a new brand called Campa. We used to have this soft drink, years ago. That is backed with a bang in Ayodhya. Then there are other brands. I saw on dhabas, there was this Adani Wilmar advertising about Fortune Group of oils and so and so. So, it is bringing brands, it's bringing tourists, it's bringing foreign exchange to the country. Most importantly, Uttar Pradesh as a state with 25 crore people is going to be hugely benefited by this development. I think UP, as it is, has become the third largest state vis-a-vis economy is concerned.
But now you will see that tourism is going to put this in a different league altogether. About $200 billion, Uday, is our tourism revenue out of the $3.75 or $3.8 trillion of our GDP. This number is going to grow and it will be attributed to Ayodhya. I can say that with conviction. So I think what you see here is that if there is government's will, if there is government's intention which is there to make sure that development happens in that area, nothing can come in the way. Nothing can stop it. So if somebody can ask that, why wasn't it there until today? That is because the governments before this, before 2014, there was no initiative by the government. I have seen Ayodhya in 2012, 2013 also. One tiny little, tent where Ramlala was there, but that was, of course, for other reasons. But otherwise also the town could have been developed even then. Even if the temple wasn't there, the town could have been developed because of the relevance of Ayodhya, but there was no attention paid. And I think ever after the Supreme Court judgment came, the government took the initiative. And today Ayodhya is a completely different place. The real estate development, why did I forget that? The kind of real estate prices which we see in Ayodhya, you will see some of the best places in the country competing with it in the next couple of years. People like Gurugram, people like Bangalore, places like Mumbai, places like Bangalore, Gurugram, you will see these places matching up to the real estate prices which you're going to see in Ayodhya. So I think all in all, a perfect branding has been done spiritually as well as infrastructure-wise. And I think this branding is going to go a long way and the number of tourists are going to increase. But I have a point to make here. That is, if we need people to keep coming here, we will have to make sure that the connectivity of the place, because once when I plan, I will definitely go even if I have to face connectivity issues. But if I plan it for the second time, the third time, if I want to be a repeat tourist, I must have a proper connectivity. And infrastructure also should be up to the mark. So it is upon the people also. What government has done, it's fair. But it's up to the people to make sure that that infrastructure is maintained. That infrastructure is preserved in the manner and spirit in which the government brought it. If you have people spitting on the walls, that pan and so on and so forth, I don't think any place can survive in the long term. So I think the onus is also on the tourists who are visiting there. If they want to keep coming back again and again, at the same time, the onus is on the local authorities to make sure that the infrastructure remains up to the mark for a longer time. Uday, over to you. All right, let me in fact quickly play out what people of Ayodhya now are saying on their anticipations of the PM's visit and how much the temple city has changed. बड़ी है? हाँ बहुत बढ़िया भैया। हाँ एक नंबर। लोगों ज्यादा आने लग गए हैं। बहुत एकदम। कितने गिलास पहले पिलाते थे? पहले 100-150, अब तो 400-500 गिलास। हाँ मतलब राम मंदिर बनने के बाद कमाई भी बढ़ गई। बहुत पहले से 4 गुना 5 गुना बढ़ गई है सेल। इस समय भीड़ बहुत भारी बढ़ गई है। पहले भीड़ कम थी, अब बहुत ज़्यादा हो गई है। लोग आते जाते रहते हैं ज़्यादा। कमाई भी बढ़ी उससे? कमाई भी बढ़ गई है। असर पड़ा है मतलब? असर बहुत ज़्यादा पड़ा है। लगातार 17 जनवरी से अभी तक लगातार भीड़ वैसे ही चल रही है। किसी भीड़ में कोई भी अभाव नहीं आया है। बहुत फर्क है। ये दुकानदारों सब 4 गुना बढ़ गया सब कुछ। भीड़ उतना ही है। भीड़ कम नहीं जो 22 जनवरी से। लोग भी आ रहे हैं और कमाई का यहाँ पे जरिया भी हो गया है। लोग बाहर से भी आके यहाँ पे कमा रहे हैं। बहुत अंतर है बिजनेस में, हर चीज़ में। मतलब जैसे बेरोजगार जो छोटे मोटे से वो अपना कोई भी काम कर रहे हैं, फोटो ही बेच रहे हैं, तो उसमें 2 पैसा कमा रहे हैं। बहुत लाभ है। VIP आ रहे हैं, अच्छे अलग अलग कंट्री से लोग आ रहे हैं, विदेश के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। भक्तों में बहुत उत्साह है और बढ़िया है। बहुत कुछ करा है मोदी जी ने। इस बार मोदी सरकार है, 4 तो पार है। बहुत अच्छी हो गई है, बहुत बदल गई है। आने वाले टाइम में और भी अच्छी हो जाएगी। और ये मोदी का ही वो है कि जो यहाँ राम मंदिर बन गया। राम मंदिर बनने के बाद यहाँ पे काफ़ी कुछ बदलाव हुआ। यहाँ की हवा, यहाँ की पब्लिक सिटी जो भी है, यहाँ पे काफ़ी बदलाव हुआ है। और जहाँ तक देखा जाए, यहाँ के प्रत्येक नागरिक को एक नई जीवन रेखा मिली है जीने के लिए और रोजगार भी मिलने की उम्मीद
की जा रही है। कितनी भीड़ रहती है, लोग से दूर आते, पहले अयोध्या में आते नहीं थे। राम मंदिर बनने से लोगों के दिल में एक जागरूकता भी पैदा हो गई है। मतलब कि वो इतना विश्वास हो गया कि कि हमारे जो मोदी जी हैं, आप राम मंदिर बनवाया है, उन्होंने इतनी हेल्प की है दूसरों मंदिर के लिए भी नहीं, लोगों के लिए भी, गरीबों के लिए भी, सबके लिए ही। बहुत कुछ बदल गया है यहाँ पे। पहले जो कुछ यहाँ पे कुछ नहीं था, पूरे देश में बदल गया है। और यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा है आके, पूरी व्यवस्था इतनी अच्छी है, हम लोग बहुत सेफ महसूस कर रहे हैं। अगर यहाँ हम सेफ नहीं होते तो हम अकेली महिलाएं नहीं आ सकती थी। हम पूरी बस भर के अकेले आए हैं, पूरी बस पूरी लेडीज की भर के आई है। कितना प्रोग्रेस किया है, देखो आप सड़कें बन गई हैं जगह जगह, पता मतलब लोग बाग अकेले आ सकते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। इतने दूर सफर पर हम 12 घंटे का सफर पूरा करके हम लोग यहाँ आए हैं, तो हमने देखा है वास्तव में बहुत बहुत चेंज है। यहाँ बहुत चेंज आ गया है। जैसे कि ये छोटा सा मतलब कि एक कस्बा टाइप था, अब यहाँ की मतलब कि इतना डेवलपमेंट होता जा रहा है यहाँ राम मंदिर बनने के बाद से। और मैं जहाँ तक समझती हूँ कि यहाँ रोजगार मिलेगा लोगों को, और ये मतलब बड़ा शहर के रूप में तब्दील हो जाएगा। ये रामनगरी इतनी बदली मोदी जी के प्रयासों के बाद में। भारत हिंदू राष्ट्र है और यहाँ पर हमारी संस्कृति को बढ़ावा नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा। अब यहाँ पर अयोध्या में जो हमारी राम से जुड़ी हुई जितनी बातें थी, उन सब का इनोवेशन हुआ, सब चीज़ करके और फिर जितनी सारी हमारी यहाँ की जनता थी उसको रोजगार मिला। आज से पहले अयोध्या कोई भी नहीं आता था, क्योंकि किसी का ऐसा अधिकार नहीं था, सबका पोजीशन ऐसा था कि भाई मुस्लिम की तरफ से ही था। तो वो अब सब अब अच्छा लग रहा है। राम मंदिर बन गया और यहाँ पर लाइट बन गया, फिर रोड बन गया और बहुत सी चीज़ें यहाँ पर बदल चुकी हैं। 2 दिन से हम लोग आए, कोई प्रकार की असुविधा नहीं हुई है। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है, दर्शन के लिए भी बहुत बढ़िया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है और भी होगा, इतनी उम्मीदें हैं हमें। Himanshu Bhatt is joining us live, senior journalist. Himanshu Bhatt, clearly, people of Ayodhya are ecstatic. They're saying that they've seen a lot of change on ground. How much has this helped Ayodhya's local economy and obviously the infrastructure push as well facilitated pilgrimage to the temple town? It has changed. It has definitely changed, and it will help economy a great deal. Let me tell you something, since 22nd of January, it's not even 4 months. Already more than a couple of crore people have already visited. Just imagine the plight of a man who sold just printed photos on the road. The young teenager who hardly used to sell about 10 photos in a month, now sells 10 per day. That's the quantum change. And I'm speaking from, rock bottom. You are going to have those renkliwalas, the thelewalas, who are selling, small items. Or someone who is selling a small food item, taking a thela and sitting there. And by end of the day, if he is prepared, $500 worth of food, he sells everything and goes back home. See the amount of happiness that it comes. And now it percolates down the day. See, you cannot go from up to down. You can always go from down to up. And that is where the base is built. Infrastructure, as Mr. Kohli said, it will come up. It will come up to the mark if people wish. But not only Ayodhya, what I am looking at is, the economy of UP is likely to benefit by the projections. What it says is, the total economy of UP will benefit if this 250-kilometer corridor of Ayodhya, Kashi and Mathura comes up. Once it is ready and people start, traveling around that, only the local tourism will boost 10 to 25% of UP's economy in the sense. Now, if that is going to be the figure after 5 years, it's going to help UP achieve that 1 trillion mark in a very rapid way. It will have a very, very big impact. And on the ground, if I tell you something, that what is happening is right now it's a euphoria. Everybody wants to go and visit once. But to go there repeatedly, I'm not looking at the high-end hotels. I'm just looking at the middle-class hotels. And you look at that. A family of 4, a family of 6,
with 2 elders and 2 youngsters coming to Ayodhya for a tourism purpose for 3 to 5 days, moves around in this 250-kilometer corridor, will spend at least 3 to 4,000 bucks a day. If I take that as a minimum and go on it, when you have in 4 months' time flat, you have more than 2 crore people coming. How much does it boost the local business? You have to just think of it. And that is the way it is going. We are not at present looking, I'm not at present looking at, people arriving from outside at Maharshi Valmiki International Airport. They will keep coming, 5, 10, 12 of them. They will aid in their own way. But the bulk is going to be those religious and semi-religious people who will want to visit Ayodhya, have a dip in Saryu, go to Kashi, go to Mathura, moving in that corridor for 3 to 5 days. And that is where this is going to help a lot. And this is going to be a model for some other places in this country where such a semi-religious tourism belt could be attained. See, we are talking of Goa. The tourist who goes to Goa wants to go first to Ayodhya. Do you know that? If you see last 1 year's wish list, you will find that anybody and everybody, be it a modern youngster who puts in earphones and doesn't take those earphones out even during travel, from that youngster onwards to the 80-year-old grandmother, everybody wants to go to Ayodhya. And everybody will go there, means everybody will spend there a little, contribute to the local economy. And in that sense, when I see, I foresee this, bringing about a sea change in the local economy and the economy of UP. I will not be surprised if UP becomes the first 1 trillion state with this, Uday. My colleague Abhishek, meanwhile, has filed this exclusive ground report from Ayodhya. Let's play it out. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज शाम को होने वाले रोड शो की तैयारियां अयोध्या नगरी में भव्य तरीके से देखने को मिल रही हैं और कहा जाए तो पूरे शहर को न सिर्फ दिव्य तरीके से सजाया गया है बल्कि भगवान श्री राम के दर्शन करने जब शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां मौजूद होंगे यानी बाकायदा 2.5 किलोमीटर के इस रोड शो के लिए व्यापक इंतजाम और तैयारियां देखने को मिल रही हैं। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री के कटआउट्स इस तरह लगाए गए हैं। हम इस वक्त लता मंगेशकर चौक पर हैं जहां ओपनिंग पॉइंट है प्रधानमंत्री के इस रोड शो का और चारों तरफ इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट्स, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कटआउट्स लगे हुए हैं, बैनर्स लगे हुए हैं उनके स्वागत के लिए और इस पूरे परिसर को इसी तरह सजाया गया है। शाम को लाइटिंग्स होंगी, ख़ासतौर पर कहा जाए तो अलग तरीके की लाइटिंग्स लगाई गई हैं। 80 तकरीबन स्पॉट्स हैं जहां पर लोग प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए वहां पर मौजूद रहेंगे। एक विशेष वाहन बनाया गया है जिसे रथ भी कहा जा सकता है जिस पर सवार होकर प्रधानमंत्री इस रोड शो में शामिल होंगे। 2.5 किलोमीटर के इस रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन, लोगों का प्यार स्वीकार करते नजर आएंगे। इसी जगह से यानी इसी लता मंगेशकर चौक से इस रोड शो की शुरुआत होगी। उस दौरान लोगों के यानी दर्शनार्थियों को किसी तरह की परेशानी ना हो, किसी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े, इसका भी ख़ास तौर पर इंतज़ाम किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की बात की जाए तो पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। एसपीजी ने कल देर शाम ही पूरा हैंडओवर अपने हाथ में ले लिया था। पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट और एक अलग डिप्लॉयमेंट चार्ट तैयार किया है एसपीजी की तरफ से जिसमें पूरे इलाके में हर एक चप्पे पर सिक्योरिटी फोर्सेस नज़र आ रही है। दर्शनार्थियों को परेशानी ना हो इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है और यहीं से इस रोड शो की शुरुआत होगी। यहाँ से रामगमन पथ तक यानी रामलला के मुख्य मंदिर के मुख्य द्वार तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रोड शो के दौरान पहुंचेंगे। 2.5 किलोमीटर की ये यात्रा, प्रधानमंत्री का जो कॉन्वॉय है वो पीछे होगा, प्रधानमंत्री का रथ आगे होगा। लोग अभिवादन करते हुए
फूल मालाओं से उनको स्वागत करते हुए नजर आएंगे और फूलों की वर्षा करते हुए यहाँ नजर आएंगे। तमाम लोगों को अलग अलग वर्गों के यहाँ बुलाया गया है, जिला प्रशासन ने इंतज़ाम किया है और देख सकते हैं आप किस तादाद में जो लोग हैं ये यहाँ पर ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री के आने से एक अलग छटा बिखेरते हुए नज़र आ रहे हैं और लोगों के अंदर उत्साह भी उसी तरह का नज़र आ रहा है। सुबह से ही यहाँ पर इसी तरह की जो भीड़ है वो उमड़ी हुई है और बड़ी तादाद में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को लेकर लोगों के अंदर उत्साह देखने को मिल रहा है। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक सिंह। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.